अस्सलाम वालेकुम। कल के जो वीडियो हैं, कल का जो वीडियो हमने उसमें पढ़ा था द इम्पोर्टेंट टर्म्स, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। उसमें हमने पढ़ा पोल, व्हाट इज़ पोल। सपोज दिस इज़ द मिरर, दिस इज़ द स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर. It is midpoint, the midpoint of this spherical mirror or concave mirror, it is the pole. This is the diverging mirror, convex mirror. It's called diverging because it diverges a parallel beam of light which falls on it. P is it is center, it is called a pole. So center or midpoint of this mirror, spherical mirror, concave or convex, it is called a pole. ठीक, कल इसके बाद हमने पढ़ा था एपर्चर. एपर्चर इट इज़ डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर, डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर. और हम ये भी कह सकते हैं एरिया विच इज़ अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सपोज दिस इज मिरर, इसका एपर्चर हम लेंगे यहाँ से, इसका डायमीटर जो है, दिस इज़ द डायमीटर ऑफ दिस मिरर, इट इज़ कॉल्ड डायमीटर. इट पास थ्रू द पोल, हाँ इट पास थ्रू द पोल, it has to pass through the pole. So it is the aperture of the, so more is the aperture, more is the area of the, more is the diameter, more is the area, more is the area of this, more is the diameter, more is the area. So that is why it is called, it is also defined as the area. Aperture also defined area which is available for the reflection of the light. So this is second term, center of curvature जो है, center of curvature, it is the center of this sphere of which this mirror forms a part. Radius of curvature is the radius of this sphere of which mirror forms a part. Principal axis, it is the line which joins the center of curvature in pole of the mirror, and it is extended on both sides. It is extended on both sides. This is the principal axis. इसके बाद हमने पढ़ा था इसके बाद हमें पढ़ना है प्रिंसिपल फोकस. और आज क्लास में प्रिंसिपल फोकस हमें पता होना चाहिए. जो प्रिंसिपल फोकस हैं हम तभी इसको डिफाइन कर सकते हैं जब हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेंगे. सपोज दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इट फॉल्स ऑन दिस मिरर, दिस इज द कनकेव मिरर, इट इज कन्वेक्स, इट इज कनकेव मिरर. सो दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन इट. कनकेव मिरर की एक खासियत है, इट्स प्रॉपर्टी इज दैट इट कन्वर्जेस दिस parallel beam of light. Suppose it converges this at point F. So F is the principal focus, it is the point actually. Here these rays actually meet. So F, which is principal focus, it is the real point in case of concave mirror. So what is how is it defined? So we can define it in this way. Suppose it is the point on the principal axis, it is the point on the principal axis at which a parallel beam of light which is parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror actually meet. Here it is a concave mirror. So F is surely a real point. So हम दूसरा जब लेंगे कन्वेक्स मिरर, हम अगर डिफाइन करते हैं हमें करना है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल फोकस. सो हम ऐसे लेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन दिस मिरर. सो इस मिरर की एक खासियत है, इट डाइवर्जेस दिस रेज, डाइवर्जेस लाइक दिस, डाइवर्जेस लाइक रेज. So when we produce these diverging rays backwards, it appears that these rays are coming from F. It means they diverge from F, or in other words we can say that it appears as if they are meeting at F. These meet at F. They meet at F. Appear to meet here. So in case of convex mirror, this is the convex mirror. F is virtual point. How? Because at F these rays appear to meet. These rays appear to come from F. So what is principal focus in case of concave mirror? It is the point on the principal axis at which a parallel beam of light which is parallel to the principal axis diverge from in case of convex mirror. So F, this is the principal focus. So अब हम जो दूसरा है, दिस इज़ द पोल, यहाँ भी पोल हम लिखेंगे. जो डिस्टेंस है पोल एंड फोकस का डिस्टेंस,
pole and focus के दरमियान. This is called focal length. It is denoted by small f. So small f is the focal length. Focal length it is denoted by f. हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं? It is distance between the principal focus and pole of the mirror. Distance between principal focus and pole of the mirror. This is called focal length. So what is difference between capital and small, capital F and small f? F is the principal focus, small f is the focal length. F is point, actually it is point on the principal axis, while as f is the distance between focus and, it is distance between focus and pole of the mirror. So f is point, small f is distance, capital F is point, small f is distance. So these are the terms which are very important. So इस spherical mirror को, spherical mirrors जो हैं उनको अच्छी तरह से हम तभी लर्न कर सकते हैं जब हमें इन चीज़ों का पता हो, इन टर्म्स का पता हो. नाउ जो अनदर जो पॉइंट है, टॉपिक है, दैट इज साइन कन्वेंशंस. हमें याद रखना है साइन कन्वेंशंस. These are actually rules which we have to obey, which we have to follow. जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं तब हमें डिस्टेंस मेजर्स करने, डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, हाउ फार इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, हाउ फार इज इमेज फॉर्मड फ्रॉम मिरर, इट इज़ वेदर इट इज़ बिहाइंड मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर. हमें ये अब की डिस्टेंस मेजर करनी है. व्हाट इज़ द साइज ऑफ दिस इमेज, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ साइज ऑफ द इमेज, whether it is real, whether it is real or virtual image, virtual. इसके लिए हमें rules हैं, उन rules को हम बोलते हैं sign conventions. जो ये sign convention उनको बोलते हैं new Cartesian sign conventions, new Cartesian sign conventions in case of mirrors. Why are they called new Cartesian sign conventions? Because here rectangular coordinate concept of rectangular coordinate system comes into play. So this, we know that this rectangular coordinate system, the concept of rectangular coordinate system was given by Descartes. So that's why it's called Cartesian system, new Cartesian sign conventions. According to these 9 sign conventions, जो rectangular coordinate system में हम लेते हैं principal x axis, यहाँ हम लेंगे वो x axis जो है rectangular coordinate system, वो हम यहाँ हम लेंगे in case of mirrors as principal axis. ये है rectangular coordinate system, ये x axis, ये है y axis, y तो y dash, x and x dash, this is y dash. So अगर हम यहाँ लेंगे हम mirrors this x axis is taken as the principal axis of the mirror, and pole is taken as the origin. This is origin in case of rectangular coordinate system. In case of sign conventions, new Cartesian sign conventions, P is taken as the origin. This is the first point, rectangular, and this is the first point. The principal axis of the mirror is taken along the x-axis of the rectangular coordinate system, and pole of the mirror is taken as the origin. This is the first point. Second point is the object is always taken along the left hand side. It means that ऐसे बोल सकते हैं हम, the light which is incident on the mirror from the light is incident from the mirror from the left hand side, like this. So third point, this is second point. Third point, all distances, the distances which are parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. It means that we have to start from P. And we have to move either this way, right to left or left to right. यानी पोल से हमें स्टार्ट करना है. ऑल डिस्टेंस which are parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. पोल से हमें स्टार्ट करना है. This is the third point. What is the fourth point? Fourth point is जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, हमें पोल से मेजर करना है. अगर हम मेजर करेंगे लाइक दिस यानी अपोजिट डायरेक्शन,
opposite direction to that of incident array. If the distance is measured in the direction opposite to the incidental light, it is taken as positive, and vice versa. Vice versa means if we are measuring the distance in the direction of the incident array, like this, लाइट जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव होती है, लेफ़्ट टू राइट मूव होती है, हम भी वो डिस्टेंस जो है वो लेफ़्ट टू राइट मेजर करनी है. सो इट इन दैट केस इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव. द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इट विल बी पॉजिटिव. यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जो अपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव है. यानी distances which are measured in the direction opposite to that of incident ray are negative. The distance which are measured in the direction of the incident ray are taken as positive यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, the distances which are measured in the direction of the incident ray are taken as positive, while the distances which are measured in opposite direction to that of incident ray are taken as negative. यहाँ से हम स्टार्ट होंगे पोल से, यहाँ तक यहाँ की तरफ जाएंगे मेजर करते करते, वो नेगेटिव हैं. अगर यहाँ से जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दे आर टेकन एज पॉजिटिव. सो नंबर फर्स्ट इज द हाइट्स विच आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. नंबर फिफ्थ विच आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. द हाइट्स perpendicular to the principal axis pointing upwards are taken as positive. This is taken as positive. The heights which are perpendicular to principal axis pointing downwards are taken as negative. These are some sign conventions which you have to remember in our respects. तभी जाके हाफ जो है रे डायग्राम आप पहले ड्रा कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है डिस्टेंसेस हमें मेजर करना है, यू वी सी एफ, जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का, साइज़ है इमेज का, वेदर इमेज इज़ रियल और वर्चुअल, तभी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं जब ये जो रूल्स आप याद रखोगे. एंड थैंक्स.